Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 12 lecture series. Today we'll be covering the concept of the series and parallel combination of springs from the chapter Oscillation. So let us start. Before going on to series and parallel combination, let us quickly revise the basics of spring constant. So let us say you got an arrangement like this where this block of mass m is connected to this spring which is having spring constant k. Now when you pull this block to some distance x, let us say, there will be a restoring force which will be created in this और उसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस के एक्स. जितना ज़्यादा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा रिस्टोरिंग फोर्स आएगा जो स्प्रिंग की वजह से रहेगा. सो दिस फोर्स इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और इसके साथ में माइनस साइन आता है क्योंकि इन दिस एग्जाम्पल द डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द राइट और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स आने वाला है दैट विल बी अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन. सो दोनों ऑपोजिट में है, इसके लिए वी गॉट दिस नेगेटिव साइन. As you stretch the spring, the spring wants to come back in its original shape. Therefore, it applies a restoring force F over here. Now, when we remove this proportionality sign, we get this constant which is called as spring constant K. या इसको हम लोग force constant भी बोलते हैं. Now, let us go ahead and talk about series combination of spring. Now, in this example, we got two springs over here. Let us say पहले वाले का spring constant है K1, दूसरे वाले का spring constant है K2 and they are connected to mass m over here. Now if we displace this block by distance x towards the right, तो होगा क्या कि there will be elongation in spring 1 and there will be elongation in spring 2 also. So ये जो total displacement हमें x मिला है that is because of पहले वाले स्प्रिंग की वजह से डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वो भी थोड़ा सा एलोंगेट हुआ है एंड दूसरे वाले स्प्रिंग की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है. नाउ वी ऑलरेडी हैव दिस फॉर्मूला फॉर अ पर्टिकुलर स्प्रिंग f इज इक्वल टू माइनस के एक्स. खाली जब हम मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो वी गॉट f इज इक्वल टू के एक्स. सो इन दिस केस x विल बी इक्वल टू f बाय k. सो इफ आई टेक अनदर स्प्रिंग विच विल बी इक्विवेलेंट टू दीज टू स्प्रिंग एंड उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको हम लोग ks से डिनोट करेंगे यहाँ पे. देन ये जो x है उसकी जगह पे वी कैन राइट द फोर्स F, रिस्टोरिंग फोर्स F which is being generated divided by the spring constant for this series equivalent. This is equal to x1 के लिए we can write F upon k1 and x2 सेकेंड वाले स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट we can write F upon k2. In all the cases the force is same because the same mass is attached और वो दोनों एक ही लाइन में है. So they both are experiencing the same force. Now यहाँ से we can take out this force common and cancel out. So what we get is ये जो series equivalent है Ks that is equal to 1 upon K1 plus 1 upon K2. अगर बहुत सारे spring in series है then in that case we can write the series equivalent as 1 upon K1, 1 upon K2, 1 upon K3 plus so on. अगर n springs है तो it will be 1 upon Kn for n springs in series. Now ये वाला सिनारियो आप देखो, अगर हमें क्वेश्चन दिया है कि दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है तो अगर दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल होगा सो इन दैट केस K1 will be equal to K2. Let us say it is equal to K and this is for the case when the springs are identical. So in this case we can write 1 upon Ks is equal to 1 upon K plus 1 upon K which will give you 1 upon Ks is equal to 2 upon K and finally we got the series equivalent will be K by 2 over here. And if you apply this same funda over here, अगर हमारे पास n springs है सबके सब identical है then in that case in general we can write K by n where K is the spring constant for each spring and n is the total number of springs. Fine. I hope आपको series combination समझ में आ गया. Now let us go ahead with the parallel combination. Now let us say यहाँ पे parallel combination में you got two springs with spring constant K1 and K2. When you pull this mass downwards, so दोनों spring के अंदर there is some restoring force because they are different springs. दोनों के अंदर restoring force जो होगा वो अलग अलग होगा. So F1 will be equal to K1 into X and F2 will be equal to K2 into X.
माइंड यू दोनों स्प्रिंग क्योंकि कनेक्टेड है इन पैरेलल, दोनों का जो elongation होगा that will be same. Now if we assume an equivalent spring जिसको हम लोग ने ये मास m कनेक्ट किया हुआ है and kp with the parallel equivalent of k1 and k2, then the total force के लिए we can write down it will be equal to F1 and F2, restoring force by first वाला spring and second वाला spring. So F की जगह पे we can write kp into x, F1 की जगह पे we can write k1 into x and F2 की जगह पे we can write k2 into x. Now over here we can take out x common and cancel out. So यहाँ पे हमें parallel equivalent क्या मिला, k1 plus k2. Now if you have n springs in parallel, in that case parallel equivalent will be k1 plus k2 plus k3 से लेके kn. और अगर सारे values same है for n identical springs, we can write kp is equal to n times k, where n is the number of springs and k is the spring constant of each spring. Important point to note over here is कि parallel में ये जो elongation है x वो सारे स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट रहेगा. एंड जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रिस्टोरिंग फोर्स वो क्या रहने वाला है, इन लोग के लिए कांस्टेंट रहने वाला है. प्लीज नोट दिस. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. Thank you for your time. If you are finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates. Stay connected by subscribing to Physics HQ for upcoming classes and join our Telegram group for all latest development and real-time updates from Physics HQ. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.